courtly culture. This is part of history of India, 7th, 1605 to 1750. The topic which we have decided to discuss is primarily courtly culture, या हिंदी में कहूँ तो दरबारी संस्कृति. And why we need to understand this? What is the significance of courtly culture? What is the importance of courtly culture? And when we say courtly culture, what do we mean by that? हम जब दरबारी संस्कृति शब्द यूज़ करते हैं हम कहना क्या चाहते हैं और क्यों हम इस पर बात करना चाह रहे हैं. हमने क्यों इसके ऊपर एक चैप्टर रखा है आपके पढ़ने के लिए और इसको इतना इंपॉर्टेंट समझा कि हम आज आपसे बात करें आकर के. ये बात मैं थोड़ा तफसील से आपसे इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड during the era when there was no computer, when there was no television, when there was no radio, the means of communication of an authority were through rituals, through systems, through various kind of practices, use of space, use of architecture, use of ideology, use of numismatics or the coins. So there were multiple ways through which the court asserted its supremacy, its hierarchy, or its position. So there's a well-defined method through which courtly culture was perpetuated or practiced so that the message of authority should be communicated to the locals, to the common man, to the subordinates, to the mansabdars, to the jagirdars, to the zamidars. So how will you communicate that message that the king is the supreme? That process is communicated through set of rules which we call etiquette, or I'm trying to call it courtly culture. And this courtly culture was not only confined only to the practices within the court, but it manifested outside court also. Even within a fort complex, there were places that this is the place for the king, this is the place for the household, this is the place for the mansabdars, subordinates, other paraphernalia. So the hierarchy was very clearly defined, the structure was very clearly defined, so that from the sight of it, the moment you see it, जैसे आप उसको देखें, then you can understand who is the central figure, who is at the focal point of all this structure or all these practices. And that central point is primarily and solely is the king or the emperor or the ruler. So the whole courtly culture is primarily centered towards ruler. मैं अगर इसको आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो वो सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की गई थी, वो व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई थी जिसके सहारे आप ये समझ सकिए कि राजा ही इस पूरी सत्ता के केंद्र में है. राजा कहाँ बैठेगा, राजा के पास कौन आएगा, राजा के बगल में कौन आ सकता है, राजा के बगल में किसका मकान हो सकता है या किसका टेंट लग सकता है, किसका टेंट कितनी दूरी के ऊपर लगेगा, जब वो आएगा तो कैसे आएगा, कैसे झुकेगा, कितना अदब से आएगा. ऑल दोज प्रैक्टिसेस वर देयर टू कम्युनिकेट द आइडिया दैट ही और शी इज द रूलर और द एम्परर. इसको मैं दूसरे रूप से आपसे कहने की कोशिश करूं कि जब कैमरा नहीं था, जब तस्वीरें नहीं थी, जब अखबार नहीं छपते थे, फोटो नहीं बन पाती दोस्तों आसानी से, जिस एरा की हम लोग बात कर रहे हैं, तब कोई कैसे पहचानेगा कि ये बादशाह हैं या ये रूलर हैं? उनके कपड़ों देख करके, या उनके कपड़े जैसे ही कपड़े कोई और भी पहन लेगा तो कैसे पहचानेगा कि ये बादशाह है? विच मीन्स यू नीड समथिंग एक्सक्लूसिव फॉर द रूलर, something which is unique to the ruler. Nobody else is allowed to wear that or practice those rituals which is allowed only to the ruler. अर्थात अगर छत्र लगना है तो छत्र सिर्फ और सिर्फ रूलर के सर पे लगेगा, क्योंकि अगर छत्र उन्होंने हर एक को लगाने की परमिशन दे दी तो कैसे पहचानेगा कि इस छत्र के नीचे वाला व्यक्ति राजा है? इसके मतलब अगर कुछ चीजें किंग के लिए अलाउ की गई थी सो वही चीजें बाकियों के लिए डिस अलाउ भी थी, which means there was a restriction that nobody else can practice these kind of rituals. This is specific to this particular court and where the center figure is the ruler or the emperor. Please keep this in mind कि जिस जमाने में तस्वीर नहीं होती, there was no picture, how do you communicate that this person is the ruler? You communicate through symbols, through gestures. अगर मैं आइकनोग्राफी के ऊपर चला जाऊं, थोड़ा एंशिएंट इंडिया की आपसे बातचीत कर लूं, सो व्हेन यू सी कि एक फोटो तस्वीर बनी हुई है, एक मूर्ति बनी हुई है जिस मूर्ति में हाथ में चक्र है, देन यू कैन आइडेंटिफाई कि दिस पर्सन इज द भगवान विष्णु का रूप आ रहा है. दैट इज द सिंबोलिज्म और द आइकनोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन अथॉरिटीज. अगर शंख आ रहा है तो सिंबलाइजेस समथिंग एल्स. अगर वीणा दिखाई जा रही है देन यू आइडेंटिफाई कि ये सरस्वती देवी की बातचीत हो रही है, which means certain attributes were specific to particular character. Similarly, in the kingship or in the rulership, it was very, very well defined कि
ये वाले रिचुअल्स, ये वाले कैरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ राजा प्रैक्टिस कर सकता है और कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। सो आप सिंबॉलिकली इस बात को रीइंफोर्स भी करते थे, न केवल दरबार में बल्कि दरबार के बाहर भी। दरबार के बाहर जब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ तो राजा जब अपने शहर में घूम रहा है, अगर मैं दिल्ली का एग्जाम्पल दूँ आपको, मैं शाहजहाँ की बात करूँ अगर मैं आपसे, सो शाहजहाँ इफ ही इज लिविंग इन द रेड फोर्ट then he also goes out to the Shahjahanabad. And when he goes to Shahjahanabad, even then it should be communicated and very well represented that he is the ruler. The Shahjahan is the ruler. He is the center figure of this whole procession. So that is why the rituals were designed in a manner that which segregated, जिन्होंने अलग कर दिया था कि ये रूलर है, इसको हम अलग रूप में देखेंगे। इन प्रैक्टिसेस पे मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। इसको एक और तरीके से भी मैं समझाना चाह रहा हूँ। कोई सुपीरियर तब बनेगा जब किसी को इंफीरियर माना जाए या इंफीरियर रखा जाए या इंफीरियर बनाया जाए। सो आपको अपनी सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए किसी को अपना सबऑर्डिनेट के रूप में दिखाना पड़ेगा, एंड दैट हैज टू बी कम्युनिकेटेड to the extent possible symbolically. It should not be manifested through physical force. Symbolic representation is much more powerful than actual activation of the through the force. मैं इसको एक और तरीके से भी आपसे कह सकता हूं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी था या जो प्रभुसत्ता का कॉन्सेप्ट था, आप मुगल पीरियड पढ़ते रहे हैं, आप 1650s की अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो हम लोग 1550s की बातचीत कर सकते हैं कि अकबर डेवलप द टर्को मंगोल थ्योरी ऑफ किंगशिप, कि टर्किश आप अपनी जेनेसिस को, आप अपनी एक्सक्यूज मी, आप अपनी हेरिट डायनेस्टी से अपनी पावर जनरेट कर रहे हैं कि आई बिलोंग टू a family which traces its ancestry to either Turkish ruler or to the तैमूर की तरफ जा रहे हैं या आप चंगेज खान की तरफ जा रहे हैं या amalgamation of these two. चूंकि मैं उनका वंशज हूं और वो बहुत बड़े रूलर थे, इसलिए बाय डिफॉल्ट मेरे खून में भी वही खून बह रहा, मेरे रगों में भी वही खून बह रहा है, इसलिए आई हैव द सेम अथॉरिटी एज दोज इंपॉर्टेंट रूलर्स और द पावरफुल रूलर्स हैड. सो आप आइडियोलॉजिकली भी अप्रोप्रिएट करते हैं पावर को, या कोर्टली कल्चर में अपनी अथॉरिटी को आप मैनिफेस्ट करते हैं कि आई एम एक्सक्लूसिव बिकॉज आई बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर रेस विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टर्किश and Mongol combination, which means the whole concept of sovereignty is also very important manifestation of courtly culture. किसी और कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे बातचीत की है, आगे भी हम इस पर बातचीत करेंगे कि जो बादशाह अकबर हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ईश्वर की रे का एक हिस्सा है, मतलब वो दैवी शक्ति हैं। वो दैवी शक्ति सिर्फ और सिर्फ बादशाह के अंदर है, nobody else has that, not even the brother of the ruler has that. Unless you ascend, unless you occupy the throne, you are not legitimately holding the position, you will not enjoy that benefit, which means that person is very important. और उसको मैनिफेस्ट करने के, उसको इम्प्लीमेंट करने के बहुत से तरीके होते थे और बहुत से तरीकों से उसको कम्युनिकेट किया जाता था. I will be discussing them in a particular order, but at the moment let me specify them in terms of its ideology. जैसे मैं कह रहा था, ट्रको-मंगोल थ्योरी ऑफ किंगशिप. इट कैन बी यूज ऑफ स्पेस, कौन कितना पास आएगा, कौन कितना दूर जाएगा, कौन कितना दूर खड़ा हो सकता है, या किसको बादशाह के करीब आने की परमिशन है. तो यूज ऑफ स्पेस, आप मंदिर जाते हैं तो सर्टेन दूरी तक आप चप्पल पहन के जा सकते हैं, फिर आप चप्पल नहीं पहन सकते, और बहुत से मंदिरों में रिस्ट्रिक्शन है कि आप कोई भी सिला हुआ कपड़ा पहन के नहीं जाएंगे. दीज आर रिचुअल्स टू स्ट्रेस द अथॉरिटी ऑफ द गॉड. सिमिलरली आपके स्पेस को कैसे यूज किया जा रहा है मुगल कल्चर में, वो आपको देखने को मिलता है. आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है. पेंटिंग मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट पेंटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन. आर्किटेक्चर के अंदर कि आप इस तरीके से महल बनाएंगे, इस तरीके से दरबार को पोजिशन करेंगे, इस तरीके से यू विल प्लेस दीवाने आम एंड दीवाने खास, दैट one can identify this is the place where ruler is sitting and he or she is the ruler. That is used through that is communicated, conveyed or appropriated through architecture. Then there are certain objects. मैं भी बात कर रहा था आपसे ऑब्जेक्ट्स की, ये राजा पहन सकता है, राजा नहीं पहन सकता है. सिमिलरली राजा ये गिफ्ट देता है, ये गिफ्ट नहीं देता है. सर्टेन टाइम्स राजा गिव्स यू अ गिफ्ट ऑफ अ रोब. एक आपको फटका दे दिया कि आप को बादशाह ने आपको आपकी तारीफ की है, आपको सराहा है, इसलिए आपको एक फटका दिया जा रहा है. ही हैज़ अप्रिशिएटेड वर्क, सो ही हैज़ गिवन यू अ रोब. और ही कैन गिव यू अ स्लेव,
He can give you a gold ornament, silver ornament. In terms of hierarchy, in terms of significance, as the wish of the ruler is, you will be getting the object. At times आपको हाथी दे दिया, बहुत खुश हुए, अब आप हाथी रखेंगे. राजा ने उनको एक हाथी दिया है, वो हाथी इन सामानों के संग दिया गया है. मैं दूसरे रूप से कहूं कि राजा ने आपको लैंड ग्रांट दी है और इस लैंड ग्रांट को आप यूज करते हैं, विच मीन्स ही इज द गिवर and you are receiver. So ideologically you are communicating that who is the supreme and I am the subordinate. So that is communicated through rituals, objects, architecture, use of space, etc. इसी को अगर मैं और तरीके से आपसे समझाने की कोशिश करूं कि जो रिचुअल्स थे वो वेल डिफाइंड थे. मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में, ज़्यादा डिटेल में भी बात नहीं करूँगा, बट सजदा एंड पैबोस कि झुक करके सलाम बजा रहे हैं. किसके सामने आप सलाम बजाएंगे? आपने जाके पैबोस किया, पाँव को चूमा, सिंबॉलिकली आपने जाके सिंहासन को चूमा, या कहीं कहीं पे कल्चर था कि वो बादशाह के कपड़े को चूम लिया करते थे. अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग रिचुअल्स प्रिस्क्राइब थे, और वो रिचुअल्स ये स्ट्रेस करते थे, ये बात दिखाते थे कि हु इज़ द सेंटर फिगर ऑफ ऑल दीज रिचुअल्स, which means the authority of the ruler was being reinforced through courtly culture manifestation at the court. There is a well-defined hierarchy, well-defined set of norms through which it is being practiced. इसके संग दो तीन चीज़ें और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, स्पेशली अगर मैं मुगलों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुगल एम्पायर इज बेसिकली मिलिट्री फिजिकल एम्पायर. You have already read and I have also discussed with you the kind of मनसबदारी सिस्टम. मनसबदारी सिस्टम में किस तरीके से a hierarchy is being maintained. दू आसपा, सी आसपा, important mansabdars were given jagirdari. So there is a hierarchy of that. 5,000, 5,000, 7,000, 7,000, 2,000, 100, 2,200. There is a hierarchy of it, which means all the officials of the Mughal Empire was placed in a particular hierarchy, and that hierarchy is maintained through rituals also, through this structure of mansabdari also. एक और कॉन्टेक्स्ट में कहूँ मैं आपसे कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जनरल्स हैं, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोबल्स हैं, उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशंस दी जा रही हैं, उनको बड़ी पदवी दी जा रही है कि आप 7,000 आपकी पर्सनल रैंक है एंड यू आर अलाउड टू कीप 7,000 soldiers with you or the savars with you or the cavalry with you. Along with that you also have a liberty of maintaining दो आसपा और सी आसपा, मतलब 2 घोड़े मेंटेन करेंगे पर राइडर, और यू कैन मेंटेन 3 horses with particular horse. So this hierarchy was very clearly defined. So जो मुगल स्ट्रक्चर बन रहा है, which is also replicated to a great extent even among the Rajput rulers subsequently and in the Marathas also, that hierarchy was clearly stressed, identified and practiced, so that the supremacy of the ruler, the legitimate claim of the ruler to rule is reinforced or protected. ये बात आपको बार बार मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन से राजा नहीं बन रहा है. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ मनसबदार मिलें और मिल के वो एक षड्यंत्र करें, कूप करें, एंड दे कैन टेक ओवर, दे कैन चेंज. बट in the context of Mughals, it is important for you to realize that in Mughals from 1550s till 1857, the same dynasty continues. So what is the power of that? How that continuity is maintained? That continuity is maintained through courtly culture, through rituals, through ideology. That this particular person who belongs to this particular dynasty can only be the ruler. Nobody else can be the ruler. So you are communicating your supremacy as well as inability or inappropriateness of others to become the ruler. I'm not saying it was not being challenged. It was being challenged continuously. But as far as Mughal history is concerned, the same dynasty continues. उन्हीं के अंदर ये राज्य जो है चलता रहता है. From Babur till you see बहादुर शाह जफर के ज़माने तक. तो that is very significant. और उसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है to the system which Mughal developed, which I am trying to discuss with you as a courtly culture. साथ ही साथ जो basic tribal affinities हैं, that is very important. I am using tribal affinities not in terms of tribes as we understand in modern times. Tribes as they कबीला, मैं अगर हिंदी में शब्द यूज़ करूँ कबीला, मैं जनजाति शब्द नहीं यूज़ कर रहा हूँ. The better term will be the कबीला. So कबीलाई affiliations जो थे, जो कबीलाई सद्भावना थी कि हम इस कबीले को बिलोंग करते हैं,
एंड दैट एफिनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम राजपूत हैं, हम अफ़गानी हैं, हम चगताई हैं, हम खलजी हैं, हम तुगलक हैं. ये जो एफिनिटीज़ हैं, ट्राइबल एफिनिटीज़ या कबीला एफिनिटीज़, ये एफिनिटीज़ भी आपको स्ट्रेंथन कर रही हैं और मुगलों में इसको काफ़ी ज़्यादा ताकत भी मिली. Certain components are closer to the ruler, certain are not closer to the ruler. एक बात और मैं आपसे शेयर कर लूँ यहाँ के ऊपर, या you must understand that ruler has to maintain the balance between excessive centralization and liberal tradition. Because अगर रूलर बहुत ज़्यादा लिबरल होगा तो इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोल्ट, और अगर रूलर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, इवन देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोल्ट. दैट इज वाई सर्टन गिव एंड टेक कंटिन्यूज, कि मैं आपको ये राज्य, ये इलाका चलाने को दे रहा हूँ, नोइंग फुल्ली वेल कि यू माइट रिवोल्ट, देन सर्टन रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन दैट. That is what you have read in the Mughal land revenue system. That is what we have discussed in the Mughal mansabdari system. So what I'm trying to say, that the supremacy or the exclusiveness of the ruler is also maintained in terms of administrative structures को आप nobility कहते हैं, मैं मनसबदारी कहने की कोशिश कर रहा हूँ. Within that process, within that larger structure, the tribal affinities played very important role. कि हम traditionally बाबर के संग आए थे. I have been part of the initial movement from the Afghanistan. या जब हम ईरान से हुमायूं लौट कर के आ रहा है, सो ये तबका उनके संग आया है. मैं शब्द यूज़ करूँ तो आप समझ पाएंगे. हम तुरानी हैं, हम ईरानी हैं, अफगानी हैं. सो ट्राइबल एफिनिटीज ऑल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दीज टू. यू कैन नॉट स्ट्रिक्टली इम्पोज और इन्फोर्स द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. कैसे हम पढ़ रहे हैं, हम कोटी कल्चर को पढ़ कैसे रहे हैं, कैसे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे समझ सकते हैं. सो फॉर दैट वी हैव बीन यूजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट क्रॉनिकल्स, द ट्रेवलर्स अकाउंट. वी ऑल्सो हैव दस्तूर कौमवार फ्रॉम द राजस्थान, स्पेशली फ्रॉम द जयपुर रीजन, एंड देन वी ऑल्सो हैव मराठा दफ्तर रिकॉर्ड्स वेयर दीज कोर्टली कल्चर्स आर बीइंग रिकॉर्डेड. जोधपुर के लिए मैं शब्द कह सकता हूँ हकीकत भाई, वो बीइंग रिटन फॉर दैट पर्पज. व्हाट इज हैपनिंग? राजा किस आदमी को वेलकम करने में क्या गिफ्ट देगा, किसको फट्टा देगा, किसी को पूरा फेंटा देगा, किसी को तलवार गिफ्ट करेगा, किसी को हीरे जवाहरात देगा, किसी को घोड़ा देगा, किसी को हाथी देगा. और जो आ रहा है आपके पास, अगर कोई इंपॉर्टेंट नोबल आ रहा है तो वो भी आपके लिए क्या लेकर के आएगा, इवन दैट इज ऑलमोस्ट वेल डिफाइंड. विच मीन्स अगर मैं एज अ नोबल मिलना चाहता हूँ बादशाह सलामत से, तो मुझे बादशाह के पास ये गिफ्ट लेकर, जिसको मैं कह सकता हूँ इन द बेटर टर्म विल बी द नजर. आई हैव टू गिव दिस नजर टू द रूलर, एंड इन रिटर्न राजा विल गिव मी समथिंग एज ही विशेस. मुझसे खुश है तो कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, मुझसे नाराज है तो वो कुछ हल्की चीज देगा. विच मीन्स दिस ऑल्सो कम्युनिकेटेड द अफेक्शन एंड द क्लोजनेस विद द रूलर. Which means the courtly culture was used by the rulers to communicate their pleasure or displeasure. So there are multiple functions which courtly cultures were performing, and these are well recorded in the Dastur Kaumwar, जो हमें राजपूतानी से मिलती है, स्पेशली आमेर के इलाके से, जिसको आप जयपुर कहते हैं आज का. ट्रेवलर्स और अमेज, जब ट्रेवलर्स आए तो वो बहुत चक्के रह गए कि मुगल कोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो दिस अ होल स्ट्रक्चर, हमें मालूम है हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कौन क्या बात बोल सकता है, नक्कार खाने में कब डंका बजाया जाएगा, कैसे बात बढ़ेगी. इट्स वेल प्रिस्क्राइब्ड एंड दैट इज बीइंग फॉलोड. मैंने अभी यूज़ नहीं किया टर्म, ना ही मैंने अपने पीपीटी में उसको शेयर किया है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई कैन से कि राजा आकर के झरोखा दर्शन दे रहा है, कि अकबर आकर के एक झरोखे में खड़े हो रहे हैं, लोग उनके दर्शन कर रहे हैं. दिस इज सिम्बॉलिकली अप्रोप्रिएटिंग द अथॉरिटी, विच मीन्स उस झरोखे से दर्शन देने के अधिकार सिर्फ और सिर्फ बादशाह को है और किसी को यह अधिकार नहीं है. सो दैट एक्सक्लूसिव राइट ऑफ झरोखा दर्शन इज प्रिजर्व फॉर द रूलर. So these are the rituals, practices through which you enforce and communicate the centrality of the ruler, the importance of the ruler in the whole structure. तो रिकॉर्ड हमें मुगल के जो कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं उनमें मिलता है, पाशानामा के अंदर मिलता है, लाहौरी के राइटिंग्स में मिलता है. There is a whole tradition of court chronicles which describe at times some ruler has come to meet or some noble has come to meet, and that whole description gives us the evidence that in what manner courtly culture was maintained or practiced. ऐसे ऐसे ट्रेवलर्स ने आपको दिया,
दस्तूर का वॉज वेल पर्टिकुलरली मेंटेन डॉक्यूमेंट कि राजा ने इनको रिसीव किया, जब इनको रिसीव किया तो राजा ने इनको ये सिरोपाव दिया, या इनको ये तलवार दी, या इनको ये भाला दिया, इनको घोड़ा, वो सब लिखा हुआ है। वो कैसे प्रोक्योर होता था, किस कारखाने में बनता था, आज हिस्टोरियंस उस पर भी काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी अच्छा काम उपलब्ध है। जो लोग पढ़ना चाहें उस काम को भी पढ़ सकते हैं कि जो राजा वस्त्र दे रहा है वो रॉयल इंपीरियल कारखाने में बन रहा है या राजकीय कारखाने में बन रहा है, उस पर क्या कॉस्ट आ रही है, उसको कैसे पेमेंट हो रहा है। नाउ दिस एस्पेक्ट्स आर बीइंग वर्कड अपॉन और हिस्टोरियंस काम कर रहे हैं, और जल्दी आप लोग को जिनको इंटरेस्ट होगा वो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ भी सकते हैं। तो इन सोर्सेज के सहारे वी कैन कंस्ट्रक्ट एंड वी हैव बीन एबल टू कंस्ट्रक्ट द कोर्टली कल्चर ऑफ द मुगल्स। मैं अब उसके थोड़े मैनिफेस्टेशन अगर आपसे शेयर करूं कि कैसे होता था, कैसे प्रैक्टिस किया था, देन परहैप्स यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अप्रिशिएट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस विथ यू। इज दैट डिस्कस विथ यू। लेट मी बिगिन विथ स्पेसेस एंड सेरेमनीज इन द कोर्ट। कौन कहाँ खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा, कहाँ तक आ सकता है, या जब आएगा बादशाह सलामत तो लोग कितना झुकेंगे, नज़र उठा के उधर देखेंगे कि नहीं देखेंगे, अगर देखेंगे तो क्या पैर तक ही देखेंगे या ऊपर भी देख सकते हैं। ऑल दोज एटिकेट्स वर वेल डिफाइंड and these etiquettes were expected to be followed by each and everyone who is present in the court, which means you are imposing a particular order, the order which keeps centrality focused on the ruler. So जो आपका स्पेस एंड सेरेमनीज हैं दे आर वेल डिफाइंड, कौन कहाँ तक आएगा और कैसे आके आपको गिफ्ट देगा या कैसे आपके दरबार में उपलब्ध रहेगा। ऐसे ही हायरार्की को डिफाइन करने के लिए दीवाने आम और दीवाने खास हैं। दीवाने आम जहाँ पे वो आम आदमी से मिल सकता है, द पब्लिक ऑडियंस के लिए अवेलेबल है, बट दीवाने खास वेयर ओनली सेलेक्ट फ्यू कैन गो, जहाँ पे चुनिंदा जो नोबल्स हैं वही जा सकते हैं, बाकी किसी को वहाँ जाने का अधिकार नहीं है। विच मीन्स अ काइंड ऑफ प्राइवेट मीटिंग जहाँ के ऊपर हो सकती है। या अगर मैं दीवाने खास के लिए दूसरा शब्द यूज़ करूँ तो गुसल खाना भी कहते थे उसको, और ये गुसल खाना आज गुसल खाने जैसा नहीं माना जाता है, बट वो प्लेस जहाँ के ऊपर इंटीमेट बातें हो सकती थी। राजा अपने विश्वास पात्रों से, अपने कॉन्फिडेंट लोगों से मिलकर के बातचीत करता था। सो विच मीन्स आपकी जो स्पेस विद इन द कोर्ट है वो डिफाइन कर रही है, क्या सेरेमनीज कैसे परफॉर्म हो रही हैं वो डिफाइन कर रही हैं। दीवाने आम इज़ अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड दीवाने खास इज़ अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। इसी को अगर मैं एक और जगह समझाऊँ, अगर आपके सामने बहुत वेल नोन एग्जाम्पल भी हम लोग के सामने रहा है कि शिवाजी इसलिए नाराज़ हो गए थे क्योंकि उनको मुगल दरबार में बहुत पीछे खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि औरंगजेब का ये मानना था कि ये बहुत बड़ा रूलर नहीं है, मतलब बिल्कुल उसके खिलाफ डिसडेन से, मतलब बिल्कुल नाराज़ होकर उसने उनको वहाँ प्लेस कर दिया, विच ही रिफ्यूज्ड because in his own understanding, in his own right, he deserved a better position. So he expected that he will be placed in the highest rank in the Mughal court. He cannot be placed far behind. मतलब कौन कितना सिंहासन के पास है, कौन कितना रूलर के पास है, that defines the structure of hierarchy also. Those who are allowed to come closer to the throne, which means they have the better relationship with the king, or they have some kind of personal rapport or some kind of authority to go to near the ruler. So this hierarchy is well defined. शिवाजी इसके ऊपर नाराज हो जाते हैं because he was placed with the others, in his understanding, inferior mansabdars or the nobles. And rightly so, I'm not defending the Aurangzeb. I'm simply suggesting that even he was aware, Shivaji, who was not part of the Mughal structure, but even he was aware that in the hierarchy, if I am placed somewhere back there, then other nobles who are present there will always treat me as a subordinate. I have to be, I'm a ruler, so I should be treated equally and should be given the first place. So these are the manifestations through which you assert and emphasize or exercise the structure of hierarchy within the larger book. एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ तो उससे आपको जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। थॉमस रो, फेमस इंग्लिश ट्रेवलर, जब वो शाहजहाँ के दरबार, जब वो जहांगीर के दरबार में जाता है, एंड दिस इज़ नॉट शाहजहानाबाद, दिस इज़ नॉट दिल्ली, दिस इज़ आगरा की बातचीत हो रही है, कि जब वो वहाँ दरबार में जाता है तो वहाँ को जा करके वो आउटर सर्किल है जहाँ के ऊपर सलाम बजाता है या वहाँ जाके झुकता है। उसके बाद ही इज़ अलाउड टू द नेक्स्ट इन सर्किल, जो थोड़ा और अंदर, इसके अंदर मनसबदार लोग बैठे हुए हैं, कि वहाँ के ऊपर जो लोग बैठे हैं उनको आगे तक आने की परमिशन है। सो अब वहाँ आके वो फिर से एक बार अदब से सर झुकाता है, कम्युनिकेट्स हिज रिस्पेक्ट टू द रूलर, एंड देन फर्दर इज अलाउड टू कम क्लोजर टू द थ्रोन, और वहाँ आकर के वो ऑलमोस्ट बादशाह के प्रॉक्सिटी में पहुँच जाता है। सो ही राइट्स दैट
कि there are three layers of proximity with the ruler, and that also defines not only accessibility but also a manifestation of hierarchy, who is allowed to come closer and who is not allowed to come closer. So ये जो rituals हैं, these rituals are important to communicate the hierarchy. जो पीछे रह गए हैं, जो पास नहीं आने दिए गए हैं, which means they are not in close proximity with the rulers, they are on the periphery, they are the secondary. इसी से नोशन ऑफ सबऑर्डिनेशन भी बन जाता है कि मैं पीछे खड़ा रहूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा. साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ जागीर और पीरियोडिक विजिट ऑफ द मनसबदार वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कि रूलर के सामने आएंगे और ये दिखाएंगे कि मैं आपका सबऑर्डिनेट हूँ. सो सबऑर्डिनेशन वॉज स्ट्रेस टाइम एंड अगेन टू मेंटेन द एस्टेब्लिश हायरार्की, which means proximity with the ruler is also one of the manifestation through which hierarchy or the centrality of the ruler was being maintained. जो मैं गिफ्ट दिए जाने की बात कर रहा था उसको मैं थोड़ा सा इलेबरेट कर दूं आपके पास, क्योंकि हम लोग के पास समय कम है. कि रोब्स दिए जाते थे, अटायर्स दिए जाते थे. रोब्स दिए जाते थे, अटायर्स दिए जाते थे, कि उनको ऊपर फटका दे दिया गया, एक आपको पहनाया गया, या आपको कुछ खास कपड़ा दिया गया जिससे आपकी पहचान बन रही है, या आपको सिरोपाव दिया गया, आपको ज़्यादा तलवार दी गई, ज़्यादा गड़ी हुई. तो एक डेकोरेट आइटम है जिनके सहारे हायरार्की वॉज कम्युनिकेटेड पब्लिकली दैट हायरार्की वॉज कम्युनिकेटेड. इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कोटली कल्चर का हिस्सा रही है, इसको हम लोगों ने शेयर करना चाहा आपसे, दैट इज रेटोरिक. शब्द आडंबर, अगर मैं हिंदी में कहूँगी शब्द आडंबर, रेटोरिक. कि जब रूलर राज्य का रूल लड़ने जा रहा है और उसको लग रहा है मैं मोबिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ अपनी सेना को, तो वह कहता है इन द नेम ऑफ द रिलीजन वी आर गोइंग टू फाइट, यूनाइट विथ मी, विच मीन्स ही इज यूजिंग द रेटोरिक. हिज इंटरेस्ट इज टू विन द वॉर, विन द बैटल, सो दैट ही कैन कंटिन्यू टू रूल, बट he gives it a name of the religion. Similarly, मैं शराब छोड़ देता हूँ. कई बार बाबर ने छोड़ी, एविडेंस है, शाहजहां ने डिक्लेयर किया कि मैं इस युद्ध पे जा रहा हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा. जीतते ही फिर से शराब शुरू कर दी गई. Which means you use that as a mechanism through which you communicate the authority or centrality of the ruler, and you channelize the resources or the affiliation and the resources of the common man and the mansabdars. So there are mechanism through which you emphasize that. इस सीरीज में जो मैं एक और चीज़ स्ट्रेस कर दूं इसके पहले कि हम लोग कंक्लूड करें आज की बात, इंपीरियल कैंप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे. कि मुगल बादशाह जहाँ जा रहा है तो मुगल कैंप जा रहा है. मुगल कैंप पूरा शहर होता था, एक पूरा शहर चला जा रहा है. अब उस शहर के अंदर मुगल बादशाह का टेंट कहाँ लगेगा, उनकी बेगम का टेंट कहाँ लगेगा, वजीर का टेंट कहाँ लगेगा, इसकी पूरी हायरार्की बनी हुई है. उसके बाद बाजार लग रही है. अक्सर वहाँ से मिंट भी हुआ करता था, सिक्के भी मिंट, जहाँ बादशाह गया वहाँ से सिक्के मिंट हो रहे हैं, तो वहाँ के ऊपर से सिंबॉलिकली यू आर कम्युनिकेटिंग द अथॉरिटी ऑफ द रूलर. सो कोर्टली कल्चर इज ऑल्सो मैनिफेस्टेड व्हेन द किंग ऑन द मूव. जब वो मूव कर रहे हैं तभी पूरा कैंप ये सिंबॉलिकली डिफाइन करता चलता था कि दैट टेंट जो सबसे ऊंचा है, जिसके ऊपर परचम लहरा रहा है, वो सुल्तान का है, बादशाह का है, जिससे कि लोग पहचान पाएँ वहाँ जाना है या नहीं जाना है, कौन जा सकता है या कौन नहीं जा सकता है. बाजार चलती थी, कैटल्स मतलब सामान ढोने के लिए गाय जा रही हैं, बैल जा रहे हैं, घोड़े जा रहे हैं, ऊँट जा रहे हैं, वॉर एनिमल्स जा रहे हैं, तो पूरा शहर में चलता था. बट वो शहर भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करता था. टू वंस अगेन एज आई हैव बीन सेइंग, टू हाईलाइट द सेंट्रलिटी ऑफ द रूलर. इसी बात को मैं आपसे हाईलाइट करता रहा हूँ आपसे. इसको पढ़ने के लिए जो कोर्स हमारा है BHIC 112, आप उसको देख सकते हैं. EHI 04 में भी इसकी एविडेंस मिलती है, और सतीश चंद्र साहब की जो किताब है वो भी आप देख सकते हैं. तो आज जो हम आपसे बात कर रहे थे नक्शल में, दैट वाज प्राइमरली मेंट टुवर्ड्स डिस्कसिंग विथ यू द सिग्निफिकेंस और द इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्टली कल्चर, the tools or the mechanism through which that courtly culture was manifested and implemented and practiced, and in what ways that helped them in maintaining the particular socio-political hierarchy through which the ruler legitimized their own rule. मतलब राजा अपने राज्य को वैधता कैसे प्रोवाइड करता था. थैंक यू वेरी मच.
that the world's population has reached 8 billion on 15th November 2022. And we are still counting. I don't know where do we go from here. The predictions are scary. Any idea how many people can Mother Earth sustain? India's growing population is a serious concern, and we are soon going to become the world's most populous country. Wow, number one. Population is, after all, a human issue. The UN proposed Sustainable Development Goals cannot be achieved unless and until we consider the population dynamics. So, here we are. Indira Gandhi National Open University offers appreciation course on population and sustainable development. The course explores the linkages between population and sustainable development. In this course, there are diverse issues related to population, environmental safety, livelihoods, human health, migration, urbanization, and much more. The course duration is 3 months, but of course, you can complete it within a year. The eligibility of the course is graduation from a recognized university. So, if you are a development professional, working in a government sector, researcher, or keen to know more about the population and sustainable development, the course is must for you. Hurry up and join this course so that we are able to convert population into demographic dividend and not convert it into demographic dividend. बदलता हुआ समाज और बदलते हुए मानवीय मूल्य। आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें किस तरीके का परिवर्तन आया है। इसी परिवर्तन को आज यशपाल की कहानी के माध्यम से, यशपाल की कहानी कुत्ते की पूंछ के माध्यम से मैं आपके सामने अभिव्यक्त करूँगी कि व्यक्ति जो है किस तरीके से बदलता है, कैसे उसके मनोभाव बदलते रहते हैं। लेखक जब लिखता है तो वह अपनी यथार्थ को लिखता है, वह अपने समाज को लिखता है और उसी में जो है वह गद्य की हो चाहे काव्य की, पद्य की हो। गद्य में अगर कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथाएं, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र आते हैं तो काव्य में कविता के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति देता है। 1941 जब हमारा देश आज़ादी से पहले की यह कहानी है, जब यशपाल ने लिखी थी। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके का जो है हम दिखावा करते हैं, जो हम होते नहीं हैं और हम दिखाते हैं कि हम वो हैं। मनुष्य जो है कितने मुखौटों में अपना जीवन जीता है और उन मुखौटों को जो है सबसे ज़्यादा उन मुखौटों को कौन पहचानता है? अगर हम झांकें अपने अंतर्मन में तो सबसे ज़्यादा जो है व्यक्ति अपने आप से झूठ बोलता है। यह जो कहानी है ये किसी प्रकार के एक ढकोसले की कहानी है, एक इसी प्रकार के व्यक्तित्व की कहानी है, इसी प्रकार के पाखंड के आवरण की कहानी है। इस कहानी में जो है प्रारंभ का जो दृश्य लेखक ने खींचा है वह एक समृद्ध व्यक्ति, वकील, अच्छा जो है जाना माना विद्वान जो व्यक्ति है वह जो है जिरह यानी कि बातें कर रहा है अपनी पत्नी के साथ।
पति पत्नी की बातें हो रही हैं। एक ऐसा चित्र लेखक ने खींचा है यशपाल ने कि पति पत्नी की चुहलबाजी हो रही है। अच्छा कौन सी फिल्म लगी है और आपको तो ये फिल्म दिखानी नहीं है। हाँ, ये कितने कितने दिन हो गए हैं जज का जो है ये भी चला गया है, ये भी चला गया, यानी कि पति पति से बोल रही है। और उनका फिर तय होता है कि नहीं नहीं चलो ठीक है, आज टिकट बनवा ली हैं और देखने चलेंगे फिल्म। और सम्राट पति पत्नी का एक चित्र जो है लेखक ने यशपाल ने कहानी के प्रारंभ में खींचा है, जिसमें विवेकशील पढ़ी लिखी पत्नी है और पति भी जो है एक पढ़ा लिखा प्रबुद्ध जाना माना सा वकील है, अच्छा सा जो है कानून का जो है ज्ञाता है। तो दोनों फिल्म देख के आते हैं। फिल्म देखने का मतलब क्या है? फिल्म देखने का मतलब है कि जिस दिन हम फिल्म देखने जाते हैं तो क्या करते हैं उस दिन रात में अगर हम फिल्म देखने जा रहे हैं तो रात की नींद गई और सुबह जो है उल्टा जो उठेंगे तब भी जो है कार्य जो है वो बाधित होंगे। उसी की चर्चा पत्नी कह रही है कि हाँ देखो, फिल्म देखने का मतलब ही यही है कि एक दिन तो गया और 2-3 दिन तक फिल्म की चर्चा जो है वो होगी। उसके बाद हमारे जब हम फिल्म देख के निकलते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, एक दृश्य सा जो है हमारे दिमाग में जो हम देख के आए हैं उसका एक खिंच जाता है। और अगर हंसी मजाक की फिल्म है तो हम देखते हैं कि हम हंसते हुए से निकलते हैं। अगर बड़े दुख की या किसी ऐसे मुद्दे को उठाया गया है, ज्वलंत मुद्दे को फिल्म में, कि वह जो है हृदय पर आघात करने वाली है, कितना प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पर फिल्मों का। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह भी दिखाया है कि फिल्में किस तरीके का चित्र जो है वह मनुष्य के मन मस्तिष्क पर खींच देती हैं। आज जो हम देखते हैं, बातें करते हैं, उसमें कितना अगर हम अपने जीवन को आत्मसात करें तो कितने प्रभावित हैं हम फिल्मों से। अगर बहस अगर इस पे चर्चा होगी तो काफ़ी लंबी जा सकती है कि फिल्मों से जो है आम जीवन कितना प्रभावित है। आम जीवन से उठाई हुई कल्पनाओं में व्यक्ति जो है किस तरीके का जो है किस तरीके से वह जीवन जीता है। और फिल्मों का प्रभाव इस हद तक ज़्यादा है कि आज हम जो शादी विवाह लीजिए या प्रेम को ही अगर उसमें हम उठा लें तो व्यक्ति जो है कौन सा प्रेम करता है, वही जो दिखा। अच्छा, यही जीवन होता है। आज हमने अपना आदर्श जो है वह क्या बना लिया है। यशपाल इस कहानी के माध्यम से चित्र खींच रहे हैं कि पत्नी जो है फिल्म पे चर्चा कर रही है, उसकी बौद्धिकता पे जो है पति पत्नी की बाद में जो है बातें होती हैं कि इस फिल्म आज समाज में ये घटित हो रहा है, ये सही है, ये गलत है। विवेक उस पे हम अपना विमर्श हम देते हैं और उसी हिसाब से जो है कि तोलते हैं, हाँ ये सच है, इसीलिए जो है इस फिल्म में दिखाया है। और हम देखते हैं कि कई बार जो है धर्म से संबंधित या कुछ इसी तरीके की जो फिल्में आती हैं उसमें हम क्या करते हैं कि उनका ज़ोरदार विरोध भी किया जाता है। जितना ज़ोरदार विरोध किया जाता है उतनी ही फिल्म जो है ज़्यादा हिट होती है। और उसके पीछे फिर तरह तरह के जो हैं इंसान जो है तरह तरह की जो धारणाएं जो बनाता है, अपने लॉजिक उस पे देता है कि इसका ये है, ये मुद्दा गलत है, ये मुद्दा सही है, इस तरीके से चीज़ों को गलत तरीके से इसमें दिखाया है। और हम जब भी कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें सबसे पहले ये आता है किसी व्यक्ति के मनोभाव को, उसकी जाति को, धर्म को ठेस नहीं पहुंचाने के मकसद से यह फिल्म जो है बनी है। तो पहला दृश्य लेखक ने इस तरीके का खींचा है। और उसके बाद जैसे चांदनी रात है, फिल्म रात में देख के आए हैं। और रात में आगे लिखता है लेखक कि वो जो रिक्शा वाला जो होता है ना, उस समय 1941 की कहानी है ये। तो उस समय क्या है कि क्या होता था कि उस समय जो है रिक्शा वो चलते थे, घोड़े वाले जो रिक्शा गाड़ी जो घोड़ा गाड़ी चलती थी। तो कहते कि घोड़ा गाड़ी वाले का भाव जो है वो ज़्यादा तेज हो जाता है और इस समय क्या होता है व्यक्ति को रात के समय उनके पैसे भी बढ़ जाते हैं। चलो पैसे कभी छोड़ो, इतने दिनों के बाद पति पत्नी है, इकट्ठे जा रहे हैं तो इस बहाने जो है बातें करेंगे। चांदनी रात है और फिल्म देख के एक अच्छा सा जो है माहौल बना हुआ है। पति पत्नी हाथ में हाथ डाले फिल्म देख के बाहर निकलते हैं। और पत्नी महिलाओं को लेखक ने यशपाल ने लिखा है कि महिलाओं से भला कौन जीत सकता है। जब बात पत्नी की हो तो पति ज़्यादातर क्या है, चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। किस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के साथ वह जो है इतने सालों से रह रहा है। यहाँ पे एक व्यंग्य भी लेखक ने किया है
कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वह किस तरीके का रिश्ता होता है। इसमें दिखाया है कि सामान्यतः क्या है कि पत्नी के बारे में कहा जाता है कि पत्नी जो है वह पति की इज्जत नहीं करती है, वो जो है अपनी ही बातें जो है वह मनवा लेती है। हम जब बात करते हैं सम्मान की, तो सम्मान में यहाँ पे हम किस बराबरी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे पढ़ी लिखी एक जो है महिला है, जो जिसकी चर्चा जो है यशपाल कर रहे हैं। एक सामान्य एक चित्र उन्होंने खींचा है कि सामान्यतः जो है महिलाएं क्या किस तरीके से पति जो है अच्छा आर्थिक रूप से जब सशक्त है, पति अच्छा पैसा लेके कमाता है और पत्नी जो है वो क्या है, वो पढ़ी लिखी होकर भी घर पे रहती है, आराम से खर्च करती है और उसको वो एक आदर्श जीवन भी मानती है और उसी को में वो जो है खुश रहती है। लेकिन उसके साथ साथ वह आदेश भी देती है। एक ऐसा वर्ग जो है समाज में जिस वर्ग की चर्चा 1941 में यशपाल ने की थी, वह उस वर्ग में बढ़ोतरी हुई है, कम नहीं हुआ है वह वर्ग, बल्कि बढ़ती चली गई है संख्या। आज भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर या कहेंगे कि आज भी यह सोच काफ़ी हद तक हमारे इस भारतीय मध्यम वर्गीय समाज में देखी जा सकती है कि लड़की को पढ़ाने में हम जितना ज़्यादा खर्चा लगाएंगे, उससे जो है उससे कहीं बेहतर है कि हम उसकी शादी में खर्चा लगाएं, अच्छा परिवार ढूंढें और उसको वहाँ पे उसकी शादी कर दें। ज़िंदगी भर तक के लिए लड़की क्या है, पूरा ऐसो आराम से रहेगी। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता का भी यहाँ पे एक जिसे हम कहेंगे स्त्री विरोधी जो मानसिकता है, उसका भी यहाँ पे लेखक ने जिक्र किया है और पति पत्नी जा रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है, तो चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। पति पत्नी बात करते हुए जा रहे हैं और देखते हैं कि एकदम से पत्नी खूब पति से बातें कर रही है। वह चाहती है कि फिल्म पे जो है वह तार्किक जो है बहस होनी चाहिए और उस बहस में जो है वह अपनी बातों को रखती है, क्या समाज में ये क्या घटित हो रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फिल्म जो है काफ़ी हद तक जो मैं इस फिल्म को सफल मानती हूँ और इसने इस भाव को अच्छे से दिखाया है, जिसमें प्रेम भाव भी है और जो नीची जो जातिगत जो समस्या है उसके प्रति भी रोष व्यक्त हुआ है। एकदम से पत्नी बोल पड़ती है, अरे रुकिए तो, देखिए तो। देखती है, क्या देखती है कि एक जो है एक दुकान सी है, जो है ढाबा टाइप की छोटी सी दुकान है, उसमें बड़ा सा कढ़ाई रखी हुई है और कढ़ाई में एक हाथ में जूना लेके एक बच्चे का हाथ लटका हुआ है। बेचारा कब काम करते करते उसी में सो गया और पत्नी जो है वह काफ़ी भावुक हो जाती है और वह कहती है कि ये क्या है। वह जाती है उस बच्चे के हाथ को हिलाती है और जब बच्चे के हाथ को हिलाती है तो बच्चा एकदम से चौंक के उठ पड़ता है। अरे अरे उठो बेटा, ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो, कैसे, क्या है ये। आज हमारे समाज में कितने छोटे बच्चा किस तरीके से दरिद्रता से जूझ रहा है, यह कौन सा न्याय है। और वह उस बच्चे को उठा लेती है, कहती उठो उठो। इतनी देर में आवाज़ दिखा रहा है लेखक, आवाज़ लेखक ने खींची है कि गड़गड़ की आवाज़ करते हुए जो है वो दुकान का मालिक भी उठता है और अरे ये क्या हो रहा है, अरे आपको शर्म नहीं आती इतने छोटे बच्चे से काम कराते हुए, आप इसकी हालत तो देखिए, इसकी क्या हालत हो गई है। और वह उस बच्चे को उठा के जो उंगली पकड़ के और बड़े ही प्रेम और ममतामयी भाव से अपने साथ ले चल पड़ती है कि नहीं चलो बेटा तुम मेरे साथ चलो। तो पति कहते हैं देखो कानूनी रूप से यह चीज़ गलत है, किसी भी बच्चे को लेकर जाना सही नहीं है। क्या बात करते हो जी, हाँ इसके माँ बाप आएंगे तो हम बच्चे को दे देंगे, हम कोई बच्चा चुरा के नहीं लेके जा रहे। इसकी हालत देखिए किस तरीके से दरिद्रता से यह जूझ रहा है, इस तरीके से इससे काम कराया जा रहा है। यह भी तो एक इंसान है, ये भी तो एक छोटा सा बच्चा है, देखो मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ। महिलाओं के आगे चलती किसकी है, पति ने दिखाया है कि किस तरीके से वह अपने पति से बात मनवा लेती हैं और उनके पास तर्क भी कितने ज़्यादा होते हैं। तो वह जो है बच्चे को ले आती है अपने घर और कहती है कि देखो तो कितना मासूम सा बच्चा है, अगर इसे भी जो है अच्छे से रहने को खाने को सारी चीज़ें मिल जाए तो यह भी कितना अच्छे से जीवन जी सकता है। और महिला उसे अपने घर ले आती है और उसने छोटा सा उसका खुद का भी एक बेटा है, विशु नाम है उसका। तो वह कहती है कि देखो खून में किसी में फ़र्क नहीं है, ऐसा ही खून इस बच्चे का है, ऐसा ही खून इस बच्चे का है। और मुझे सुना के, यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मुझे सुना रही है
मेरी ही पत्नी जो है वो मुझे एक अप्रत्यक्ष रूप से, आप इसमें दिखाया गया है कि महिलाएं कहती किस तरीके से हैं अपनी बात को। जब उन्हें अपनी बात कहनी होती है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से आपको बात कह भी देंगी, आपको अच्छे से समझा भी देंगी और अपना नाम भी नहीं आएगा। तो इस वाक पटुता का, वाक चातुर्य का वर्णन भी यहाँ पे महिलाओं के का जो है लेखक ने किया है। और वह कहती है अपने पति से कि देखो बच्चा तो बच्चा है, हमें जो है इसको कुछ एक अच्छा इंसान इसे बनाना चाहिए। तो पति कुछ नहीं बोलते हैं। अगले दिन बंगले पर आते हैं, कौन? दुकान के मालिक लाला जी आते हैं और कहते हैं कि देखो साहब, हम वैसे तो माई बाप, आप हमारे माई बाप हो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो बच्चा है इसके पिता में जो है मेरे 60 रुपये आते थे और 60 रुपये तो वो दे नहीं पाए और वह अब तो दुनिया में नहीं रहे, अब बच्चा छोड़ के गए हैं और ये इतना छोटा सा बच्चा क्या काम कर देगा। हाँ, ये है कि सारे दिन जो छोटा मोटा सामान इधर उधर करता रहता है तो उसमें ये होता है कि चलो थोड़ी सी ढांढस बंध जाती है, और क्या, और बच्चा, इस बच्चे का मैं क्या करूँगा। इसके माँ बाप ने थोड़ा बहुत काम इधर उधर मेरा हाथ बटा देता है। 60 रुपये जो है वो मैं उनको उनको मैंने दे रखे थे, न पैसा दिया और न ही ब्याज दिया, मेरे तो पैसे भी गए, मेरी तो पूंजी भी गई। और अब ये बच्चा था तो बच्चा थोड़ा बहुत कर देता था, आप वो लोग इसे उठा लाए। तो कहती है, इतने में चमचमाती हुई सैंडल की खट खट की आवाज़ आती है पत्नी की। अच्छा अच्छा, तो आप आ गए, आप क्या चाहते हो, आपको क्या लगता है कि हम लोग जो है बच्चे को आपको दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, और जो है बच्चा जो है बच्चा हमारे ही पास रहेगा। तो कहते हैं उसके पति जो है वो कहते हैं कि भाई जो है बच्चे से लेबर एक लो उसे समझाते हैं कि बच्चे के रूप में जो बाल जो है बच्चे से अगर हम काम करवाते हैं तो ये नियम है, अगर आपने ये काम करवाया तो जो है आप जेल की हवा भी खा सकते हो। तो जो है वो सेठ लाला जी जो है वह मारे डर के चले जाते हैं। पत्नी इठलाती है, देखो मैंने किस तरीके से मामले को फिट कर दिया। आप तो जो है वहाँ भी मतलब अप्रत्यक्ष रूप से दिखाया है कि वो पत्नी को समझा रहे हैं, आप भले ही पढ़े लिखे हो, आप भले ही विद्वान हो, भले ही आप वकील हो, भले ही आप जिरह करते हो, भले ही आप खूब अच्छे वो हो, अच्छे ओहदे पर हो, लेकिन दिमाग मुझ में ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे व्यंग्यात्मक रूप से जो है पति ने एक व्यंग्य किया है पत्नी पे। और उसके बाद जो है पत्नी बताते हैं कि वह क्या करती है सबसे पहले। अच्छा, बच्चों में 4 साल का फ़र्क होता है जो वो विशु छोटा है और इनका ये जो बच्चा है ये बड़ा है, तो 4 साल का फ़र्क यहाँ पे लेखक ने दिखाया है। विशु की कुछ चीज़ें जो है वो बच्चे के काम आ जाएंगी। उसके बाद वह कपड़े भी लेके आती है, लेकिन कपड़े थोड़े छोटे रह जाते हैं छोटे वाले के, तो वह अगले दिन पहले बच्चे को नहलाती है। पूरा बच्चा तो दिख ही नहीं रहा था, पूरे उस पर मैल की एक अंगोछा सा बदन पे लिपटा हुआ था और पूरे बदन पे जो है ऐसे ही बेचारे के मैल वैल से चिपटा हुआ था। अच्छे लाइक बॉय साबुन के झाग से नहलाया जाता है बच्चे को, पूरा उसमें से एक मासूम सा सलोना सा बच्चा निकल के फिर आता है और दुकान पे जो है नौकर को भेज के उसके बाल कटवा देती हैं और उसके एक सुंदर सा जो है बच्चा जो है वह घर में आ जाता है। और जैसे ही पति सुबह बैठते हैं तो पत्नी बुलाती हैं, अगर इसे अच्छा वो कौन से प्रधानमंत्री थे? अरे वो अरे राष्ट्रपति बने थे, जो गरीब थे, न पढ़ते थे, प्रतिभा कहाँ छुपती है। और उस बच्चे की तरह से अगर इस बच्चे को भी अगर हम मौका देंगे तो क्या है, ये बच्चा भी कुछ भी बन सकता है। तो पति कुछ जिरह नहीं करते हैं, पत्नी की सहमति में हाँ मिलाते हैं। आप बोलते क्यों नहीं हैं? आपको हो क्या गया है? आप तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर उतनी दया, ममता या प्रेम का भाव है। हमें बच्चे के लिए अच्छा करना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे जाति धर्म कुछ भी नहीं होता है, बच्चा तो बच्चा है। हम अगर इसे अच्छी परवरिश देंगे तो यह जो बच्चा है यह भी एक नेक और अच्छा इंसान बन जाएगा। इस तरीके के जो भाव विभोर होके जो है वो बात कर रही है पत्नी। और जो है छोटा सा विशु, उसको बड़ी ईर्ष्या सी हो जाती है कि जब जो है कि उसकी जगह पे कोई और आके बैठता है, उसकी माँ उसे पूरा लाड दुलार और प्रेम उस पे लुटा रही है, तो वह जो है काफ़ी जो है प्रभावित, वो दुखी सा हो जाता है। छोटा बच्चा दिखाया है कि बच्चा कैसे ईर्ष्या कर रहा है और वो बोलते हैं कि क्यों यह मेरे ऊपर हक नहीं जताता है, क्यों विशु की तरह से मेरे गले से नहीं लगता है, क्यों इस तरीके से मुझसे प्यार नहीं करता है, संकुचा सा खड़ा रहता है। और बच्चा जो था जो है हरिया नाम था बच्चे का, तो कहती कि नहीं हरिया नाम अच्छा नहीं है, हम इसको हरीश बुलाएंगे, हरीश इसका नाम होगा, हरिया परिया कुछ नाम वाम नहीं है, इसको हटाओ इस नाम को और हम इसे हरीश बुलाएंगे।
और उसके बाद उसके लिए 3 जोड़ी अच्छे से कपड़े मंगवाए जाते हैं। बच्चा अच्छे से जो है उसके लिए जो है एक ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसको फिर जो है पढ़ाने की उसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है, टीचर रखा जाता है और इस तरीके से जो है बच्चा कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे बढ़ती है, सुनने में लगता है कि बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। हाँ, ऐसा होना चाहिए और ऐसी दया की मूर्ति और ऐसे प्रेम का भाव जो है व्यक्ति विशेष में होना लाजमी है। जब हम बात करते हैं आदर्शों की और जब हम बात करते हैं यथार्थ की, तो हम जो है किस प्रकार की हम बातें करते हैं और किस प्रकार से उसे अपने व्यक्तित्व में लागू करते हैं, यह जो है एक महत्वपूर्ण विषय इस कहानी में लेखक ने उठाया है। बात करने से जाता क्या है, बात बनाने से कि हमें कुछ क्या देना है, बात बनाने से कुछ भी बना सकते हैं। बड़े बड़े आदर्शों की हम बात भी कर सकते हैं और उन आदर्शों को जब हम लागू करने की जब बारी आती है तो क्या है, कहीं ना कहीं वो किस प्रकार से जो है वह खोखले सिद्ध होते हैं। लेखक को जाना होता है कहाँ, उनके किसी अफसर के साथ में 2-3 दिन के लिए, 2-3 महीने के लिए दूसरी जगह पे दूसरे देश में जाना होता है। तो लेखक चला जाता है और पीछे से जो है पत्नी चिट्ठी आती है पत्नी की। दिखाया है तीसरी जो कहानी का जो तीसरा मोड़ है, वह कहानी तीसरा मोड़ लेती है और दिखाते हैं कि वह जो है जाता है तो कहाँ पत्र आते हैं। शुरू में जो है वह कहीं कहीं हरीश का जिक्र आता है, फिर जो है कहाँ ये हुआ वो हुआ, विशु के बारे में, अपने बारे में पत्नी खूब लिखती है और उसके बाद कहीं आहिस्ता आहिस्ता से फिर जो है हरीश का जिक्र हल्का हल्का सा कम होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता से क्या है, उसकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। कहानी में लेखक दिखा रहा है कि शिकायतें शुरू हो जाती है। 3-4 महीने के बाद जब लेखक घर आते हैं तो वह देखते हैं कि किस तरीके से जो है पत्नी आती है, अरे खड़ा हुआ क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ सामान लेकर आओ। यह बदला हुआ जो व्यवहार वह देख रहा है, वह उसे महसूस करता है कि पत्नी क्या कह रही है। इसको तो जो है मैंने इसको एक दिन विशु क्या और शिकायतों का अंबार लगा देती है। एक दिन विशु गिर गया, मैंने डॉक्टर को लाने के लिए इसके भेजा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी बेटे की, इसको सारा दिन ये उधमस करता रहा, सारा दिन गली के लड़कों के साथ खेलता रहा, इसका क्या किया जाए, इसका तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अरे अरे, वो जो ट्यूशन के लिए जो घर पे बढ़ाने के लिए टीचर लगाया था वो नहीं आता, वो नहीं पढ़ नहीं रहा है ये। अरे जब पढ़े कुछ दिमाग में आए तब तो हम इसको जो है ट्यूशन का पैसा इस पे खर्च किया जाए, पढ़ता ही नहीं है। स्कूल में जा भेजती हूँ तो स्कूल में जो बच्चों के साथ झगड़ा करता रहता है, पूरे दिन गली में आवारा बच्चों के साथ खेलता रहता है, घर का काम का, अरे चलो चलो जाओ जल्दी से वो जो कपड़े रखे हैं बाथरूम में वो ऊपर डाल के आओ। और देखता है, लेखक बता रहा है कि वह जो बच्चा है वह छोटा सा बच्चा जाके भाग के जाता है और कपड़े सुखाने के लिए जाता है। कपड़े सुखाने के बाद जब वापस आता है, अच्छा ऐसे ही बैठे रहोगे क्या, नहीं तुम्हें जो है वो पानी रखा हुआ वो उसमें जो सामान जो उसमें डले हुए हैं कपड़े, उसमें पानी की बाल्टी डाल के आओ और देखो ज़्यादा गिरनी नहीं चाहिए। लेखक हैरान हो रहता जाता है इस व्यवहार पर। अच्छा, वो देख रहा है, वह महसूस कर रहा है एक चीज़ को अपने ही घर में। और उसके बाद जो है वह कहती है चलो चलो जी देखो देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है विशु को, चलो एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। और वह देख, आप लो बेटे को गोद में ले। जैसे ही वह गोद में लेता है वह उस दृश्य को देखना चाहती है, ऐसे एकटक लगा के देखना चाहती है। तभी आहिस्ता से खिसक के हरीश भी जो है मेरे पास आ जाता है और जैसे पास आता है एकदम से पत्नी का माथा ठनक जाता है, जैसे उसने जो चित्र उसने खींचा था, जो दृश्य उसने खींचा था, एकदम से जैसे उसका क्या है वह खराब हो गया हो। तो वह बोलती है इन लोगों को कितना ही समझाओ, कुछ भी करो, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये जितना इनका भला करते जाएंगे उतना ही ये सर पर बैठते जाएंगे। इनको चाहे खाने की लगी रहती है, कुछ भी खिलाते रहो। बच्चा जब खाता है तो ऐसी कातर नज़रों से देखता रहता है, भुक्खड़ कहीं का। इनको तो जो है शर्म ही नहीं है, कहीं नज़र ना लगा दे मेरे बच्चे को। इस तरीके का व्यवहार वह करना शुरू कर देती है और वह 2 लीची निकाल के उसको देती है, चल ले खा और जा खेल, बाहर खेल जाके। और इस तरीके से जो है लेखक कहता है कि कैसे लोगों का नज़रिया बदल जाता है, दृष्टिकोण कुछ अलग होता है, लेकिन जब बात उसकी आती है तो कहती क्या कहना चाह रहे हो आप, साफ साफ बोलो ना, सीधा सीधा कहो क्या कहना चाह रहे हो। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं तो जो है आजकल जो राजनीतिक जो चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
क्या राजनीति क्या चल रहा है? अरे सरकार के जो फैसले हो रहे हैं, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि निम्न वर्ग के जो लोगों के साथ जो सम्राट जो लोग हैं, वह किस तरीके का व्यवहार जो वह कर रहे हैं, यह सही नहीं है। उनको झूठी मानवता दिखाने का कोई हक नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि वो जो है उन्हें अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो पत्नी टटोलने की कोशिश करती है कि कहीं उसे तो नहीं कहा जा रहा है। तो फिर लेखक जो है वो कहता है, अच्छा अच्छा कब और क्या हुआ? बोले अभी जो नई चीज़ें जो चल रही हैं समाज में, अभी मैं न्यूज़पेपर देख रहा था तो उसमें देख रहा था कि किस तरीके से जो है जो सम्भ्रांत वर्ग जो है वह दिखावा करता है नीचे के लोगों का भला करने की, लेकिन वह भला वाला कुछ करता नहीं है। हाँ, तब पत्नी दुरुस्त हो जाती है कि बात तुम्हारी नहीं हो रही है, और फिर वह जो है एकदम से कहती है कि हाँ हाँ ये तो खैर है। उसके बाद जो है वह लेखक से जो है दोबारा से जो है चर्चा करना शुरू कर देती है, किसकी? हरीश की। और लेखक अंत में जो है, कहानी के अंत में अगर हम जाएंगे, चौथे पड़ाव में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि लेखक को हर एक चीज़ साफ दृष्टिकोण से दिखाई देता है। अरे सुन रहे हो, लाला जो है 60 रुपए की बता रहा था कि 60 रुपए कर्जा करता मांगता था, और 60 रुपए का तो कहीं वो ब्याज व्याज न लगा दे, और ब्याज व्याज लगा के अगर उसने बहुत ज़्यादा पैसे कर दिए तो हमारा क्या होगा, पता नहीं वो कितना ब्याज लगा देगा। तो लेखक कहते हैं हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जो है इसमें जो ये जो वो हरीश है, बच्चा बच्चा कहाँ, लाचार सा छोटा सा बच्चा, जिसने कहा तो नहीं था कि मुझे ले चलो, कहा तो नहीं था कि मुझे इस तरीके से रखो, लेकिन जब लेखक कहता है कि जब इंसान बनना सीख जाता है, जब वह उसके अंदर मानवता आ जाती है, जब वह मनुष्यों की तरह से रहना सीख लेता है, तो वह अपने लिए खुद लड़ लेता है, और उसे लड़ने के लिए दूसरे लोगों की जरूरत नहीं होती है। इसी यानी कि उस बच्चे का भला कौन करेगा? उस बच्चे का भला आदर्शवादी बातें नहीं करेंगी, इस तरीके के लोग भी नहीं करेंगे, और उस बच्चे का भला वह उसे स्वयं करना होगा, अपने लिए उसे खुद ही लड़ना होगा। दिखावे की जो चीज़ें होती हैं, या फिर आदर्श की जो बातें होती हैं, या फिर एक जो चित्र हम खींचते हैं और हम जो बनने की हम कोशिश करते हैं, या जो हौसला हम दिखाते हैं, जो झूठी दिलासाएं हम देते हैं, वह सब व्यर्थ हैं। हाँ, ये है कि हम ये चीज़ें तब दूर होंगी जब व्यक्ति इन्हें आत्मसात करेगा। जब व्यक्ति की खुद की बारी आती है तो वह किस तरीके से जो है उसके मायने बदल जाते हैं। जातिगत जो चीज़ें व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जो बसी हुई हैं, क्या कहते हैं, अरे इसका तो कुछ नहीं हो सकता, कुत्ते की पूंछ को 12 साल तक बंद रखा और बाहर निकाला तो वैसी की वैसी। उसी प्रकार से जो है इस लड़के को कुछ भी खिला दो, किसका तो पेट ही नहीं भरता है, कुछ भी दे दो, इसे रहना उसी तरीके से है, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, ये इसी तरीके से रहेंगे और इसी तरीके से इनको रहना है, यही इन लोगों का भाग्य है। यह जो बात है, जब लेखक जब बता रहा है, एक स्त्री के मुंह से उन्होंने पात्र एक दृष्टि खींची है कि किस तरीके से जो है, और यह जो चीज़ें हैं कि यथार्थ हैं। आज 1941 की लिखी हुई यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। हम जो है जातिगत जो चीज़ें हैं उनके प्रति हम भले ही हमदर्दी दिखाएं, भले ही हम कहें कि ये गलत है, लेकिन जब खुद के जीवन की बात आती है तो हमारा खुद का भी दृष्टिकोण यही होता है। तो क्या हमने अपने आप को बदला है? अगर नहीं बदला है तो क्या हम अपने आप को बदलेंगे? और अगर हम नहीं बदलेंगे तो क्यों हम चर्चा करते हैं, क्यों हम झूठी बहसबाजियों में करते हैं? और अगर जो व्यक्ति वास्तव में प्रताड़ित है, जब वह अपनी बात रखता है, जब वह अपने शोषण के बारे में बताता है, तो क्यों हमें बुरा लगता है? और कौन से मानवीय मूल्यों की हम स्थापना कर रहे हैं? एक समता मूलक समाज की जो नींव जो जातिगत जो चीज़ों को जो रखा गया है, जो व्यक्ति के अंतर मन में बसी हुई है, उनको दूर करने का प्रयास यह कहानी करती है। और यह कहानी एक बच्चे के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं की कहानी है, एक बदलाव की कहानी है, और इस कहानी के माध्यम से हमें यही प्रेरणा और यही एक दृश्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है कि झूठे और खोखली चीज़ों से समाज में परिवर्तन नहीं होगा, उसके लिए हमें उन चीज़ों को आत्मसात करना पड़ेगा। तो इतनी सी थी यह कहानी, कुत्ते की पूंछ।
पहाड़ों पर जाना किसे पसंद नहीं। इस तरह के पहाड़ तो आपने देखे ही होंगे। चलिए आज आपको विशेष प्रकार के पहाड़ों की सैर कराते हैं। ये हैं कूड़े के पहाड़, जिनके बोझ तले दुनिया दबी जा रही है। इन कूड़े के पहाड़ों में है हमारे घरों, कार्यालयों, उद्योगों से निकलने वाली बेकार की वस्तुएं, जैसे इस्तेमाल किया हुआ कागज, फटे कपड़े, पुरानी लकड़ी, धातु, कांच के सामान, सब्जी फलों के छिलके, पुराने मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि। कूड़े के ये पहाड़ न केवल शहरों में बल्कि गांव में भी पाए जाते हैं। अपशिष्ट की बढ़ती हुई मात्रा और इसकी विषैली प्रकृति हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। कभी सोचा है इसका निपटान कैसे होता है, या क्या होता है इन कूड़े के पहाड़ों का? कैसे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। यदि आप नगर निगम में कार्यरत हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, अपशिष्ट प्रबंधक हैं या अपशिष्ट से जुड़ी हुई परामर्श सेवाएं, अनुसंधान या विकास कार्य करते हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए सर्वोत्तम है। कार्यक्रम की न्यूनतम योग्यता है 12वीं उत्तीर्ण और इसे 6 महीने में पूरा किया जा सकता है, या अधिक से अधिक आप इसे 2 साल के अंतराल पर भी पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल है स्व शिक्षण पाठ्यक्रम सामग्री, ऑडियो वीडियो संसाधन और विभिन्न माध्यमों से शिक्षण की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, चलिए समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बने। अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम में दाखिला लें। हम आपके स्वागत के लिए आतुर हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें www.ignou.ac.in। धन्यवाद। Hello viewers, I am Nilima Srivastav. Along with my colleague Professor Himadri Roy, we are going to discuss about a program that has been newly launched by the School of Gender and Development Studies, which is BA Gender Studies. Before going ahead and telling you more about the program, I would like to throw light on the need for the school to come up with a undergraduate degree program. The school is already offering
two postgraduate degree programs, namely MA in Women and Gender Studies and MA in Gender and Development Studies. Then the school also offers a postgraduate diploma in Women's and Gender Studies and often 4 certificate programs which cover the disciplines of gender and its interface with law, agriculture and science. So there was no degree program that could bridge the difference or the learning deficit from a certificate to a degree program, which will help students who want to take up gender as a main subject at postgraduate degree level. So the school decided to come up with a multidisciplinary program for undergraduate learners where the core or the foundational courses have been drawn from the discipline of gender and other courses from disciplines that will build into the understanding of gender and develop skills that will lead to better understanding of gender issues that we see around us in the society. So going ahead with this focus, I would request my colleague Professor Himadri Roy to give you more details of this program. Namaste learners. This program is basically the undergraduate program with a program code called BAGS. It's BA in Gender Studies. The basic eligibility and in other informations of this is eligibility as all BA of our university is 10+2 in any discipline. It can be science, it can be commerce, it can be arts or humanities, whatever it is called. The medium of instruction for this course will be English. The duration as all the BA program of our university is 3 years minimum and maximum 6 years. And the course fee per year is 4,000 rupees. So this program will help, as Professor Nilima already said, that this program will help you to build your concepts regarding gender and other kind of sensitization and awareness of this kind so that you come up with more certificates or master's degree ahead and you can look for higher education. This is a unique kind of program that we have in our school. So with this information, I would request Nilima to talk more about the objectives for this program. After completing this degree program, the learners will be able to talk about gender as a concept and also develop gender sensitization with a understanding of formulation of empowerment of women as well as other marginalized genders. The learners will also will be acquainted with the academic discipline of gender and women studies and its concepts, development and progression to the present day status. The learners will also be made aware about the ideologies and social factors that lead to marginalization of women and related concerns that we see around in the society. The program will also expose learners to cultural, legal, political, scientific developments and socio-economic dimensions within the gender framework. Let us now talk about the program structure. Professor Roy? Yes, thank you. Leading forward to talk about the program structure, the program is divided into 6 semesters. Per semester, each semester is of 22 credit. That makes up to 132 credits. In this 132 credit, we have core courses, discipline-specific courses which are mainly from the school. We also have generic elective, we have ability enhancement compulsory courses, we have skill enhancement courses and modern Indian languages. These generic elective, ability enhancement courses, skill enhancement and modern Indian languages are courses that is taken from other schools to create the basket for the bachelor's in gender studies.
Now, it is very important that you have to understand that in this program structure, the core courses are for the first 4 semester. The first 4 semester will have core courses which are from the school. Beside that, you will also have the first 2 semester will be ability enhancement compulsory courses. We will also have modern Indian languages, the MIL, for the first, second, third, and fourth semesters. We then have the discipline specific courses which are for the third year or the fifth and sixth semester, where we have the generic elective also, along with skill enhancement compulsory courses, which will be in third semester, fourth semester, fifth semester, and sixth semesters. And these programs we will talk now in details, like what exactly are these skill enhancement, what are the core courses, what are the discipline specific courses, what is MIL, what is generic elective. I would request Nilima to begin directly from the semester 1, so that the learners have some idea, even the people who are listening and watching us will have some idea about the structure of semester wise of this program. Thank you, Madhuri, for laying a wonderful foundation and overview about the program structure of BA Gender Studies. Now, we will give you the specific details of each semester, talking about the category of courses and the course codes, course name of the courses, and from the discipline from which it has been drawn from. I will also like to reiterate the program structure and credit structure, which is total of 132 credits for the for 3 years of this undergraduate degree program, is divided into 6 semesters for equal credit weightage, that is 22 credits, which we will be talking about in our in the following discussions also. But I thought that I may give you an overview of the credit structure here itself. And the formulation in each semester is same as any other BA program that is on offer by the university. That is, it consists of an ability enhancement compulsory courses, modern Indian language courses, core courses, discipline specific courses, and general elective courses. So how these categories have been placed, that is what we are going to discuss in the following section of this program. The first semester, in the first semester, the learners will have to take 4 courses. One which is ability enhancement, then one from modern Indian language, and 2 core courses. So for ability enhancement courses, we offer BEGAE, which is English communication and skill from the discipline of English, or the learner is free to choose BHDAE 182, that is Hindi Bhasha or Sampreshan. So the learner will have to choose either of these 2 courses and then take one course under the category of modern Indian languages, whether it is BEGLA 135, English in daily life, or BHDLA 135, Hindi Bhasha Vivid Prayog. Next, we move on to semester 2. Here again, the learner is required to only take 4 courses in total and falling into the same category as that of semester 1. That means one course has to be from the category of ability enhancement compulsory course, then one course falling under the category of modern Indian language, and 2 core courses drawn from the discipline of gender. So, to give you the specific details, under the MIL category, the learner has to choose from BEGLA 136, English at Workplace, or BHDAE 136, Hindi Bhasha Lekhan Kaushal. In semester 3, I would request Professor Roy to throw light on the structure of semester 3.
Now coming to semester 3, instead of ability enhancement, we have the skill enhancement courses over here. So in the skill enhancement, as similar to the other 2 semesters, over here also you have to choose 4 courses. One is skill enhancement, one is the modern Indian languages, and 2 core courses. The skill enhancement course would be emotional intelligence, that is BPCS 183. And it has been taken from psychology. The other MIL, the learner needs to take up one option. That is, we are offering over here three options for them. One is BEGLA 137, language through literature. We have, which is English, in English medium. The other one is BHDLA, which is in Hindi 137, Hindi Bhasha Sampreshan Kaushal. And the third one is, we have a Sanskrit option over here, which is Sanskrit Bhasha or Sahitya. So you have, the learners have 3 options from there. They have to choose only one. Keep this in mind. It is very important that you choose only one, because one skill enhancement, one MIL, and 2 core courses. In semester 4, similarly, we also have the 4 courses to be taken, comprising of 22 credits. One is again the skill enhancement, one is MIL, the other 2 are core courses. Over here you have options in SEC. The previous 3rd semester you did not have any option, but in 4th semester you have an option to choose only one between BPCS 186, which is managing stress, or BPAS 186, stress and time management. These are taken from psychology. The MIL again has 2 options, that is BEGLA 138, reading and speaking skills, this is in English, and BHDLA 138, Hindi Sahitya, Vivid Vidya. Now this is very important because you have to choose one options of SEC, that is skill enhancement course, and one from MIL, that is modern Indian languages. The core courses that we have in all these 4 semesters, let me throw a light on it. The core courses that we have in course semester 1 is BGSE 001, gender sensitization. In this we have different forms of sensitization through to talk about family. We have been dealing with marriage, we have motherhood, we have language, we also have media included in it, we have reproductive rights and disability, we also have sexual harassment at workplaces. And then we have in semester 1, we have BWEF 02, which is gender training perspectives. In this training perspectives, the learner will have access to know how the gender training takes place all across all forms of medium and all across the society at different places, how the trainers are being trained, what kind of training takes place, how does the training operates. These all are being taught in first semester. The second semester core courses is BWEE 012, which is Women and Society, Global Concerns and Local Issues. Now in this we have different forms of the issues that women have been dealing with, their rights, their concerns, all the struggle that have been moving around, all the 3 movements that feminist movements that have been taking place. We have been dealing with this in the second semester, and the 4th course that is in second semester is BGS 11, understanding law and gender. This is very important and very interesting because in this you will be exposed to different kinds of law that is concerning not only to one particular gender, but all the genders are taken into consideration over here. So you will have LGBTI also in it. We do have other forms of law in it. To understand that, and very important for you learners to understand that both BGSE 001 and BGS 11, that is gender sensitization and understanding gender and law, is also in MOOCs. We do have our MOOCs online platform where the videos are already uploaded, so you can have an access over there also.
For the third semester, we have the core course BGS-02, which is Gender, Science, Technology and Society. Over here, we have different forms of scientific knowledge that has been partake, and you will be learning about it, not only the STEM, that is science, technology and mathematics, but all engineering and mathematics, but also biology. We have also in this health sciences, all forms of sciences, ICT, computer sciences, genetics, everything has been talked over here. And the fourth course in the fourth semester, that is a fourth core course in the fourth semester, is BGS 005, Issues of Gender and Development. In this course, we have developmental issues taken up. We also have labor issues taken up, sustainability, we have technology, we also have resources and energy efficiency and the women's role in both of all these. Then we have the resources like land, water, forest, biodiversity, and how does women's role in all these energy efficiency, how do they play and what do they play. These are the core courses that you have in 4 semesters, and these are the 8 courses that have been mentioned. Now for semester 5 and 6, I would ask Nilima to talk about it. Yes. Coming to semester 5 and semester 6, which constitutes the third year of the undergraduate degree program BA Gender Studies. The course placements is like one course from skill enhancement courses, then one belongs to the category of gender elective, and 2 are discipline specific courses. So out of the 4 courses that a learner has to adopt, one is from skill development, the other is gender elective, and 2 courses specifically look into the aspect related to gender. Learner needs to choose between writing and study skills, which is BEGS 183, or take up computer applications in business. The course code for this course is BCOS 183. So this is a course under the category of skill enhancement. It is either writing or study skills, which are soft skills, or a learner can also take up computer applications which will be useful for any discipline or for any learner. Then another category of course is general elective. In this, the program offers Youth, Gender and Identity, which is a course drawn from the discipline of psychology. And the course code for this course is BPCG 172. Here, basically, gender concerns related to youth and the problem of identity, how to present oneself vis-a-vis the gender concerns which are prevalent in society, have been the prime focus of this course. Then the discipline specific courses are Gender Perspectives on Health. The course code for that is BGS 004. This course focuses on the issue of gender with respect to women and also other genders. What are the health issues that are problematic for women, whether it is physical issues of physical health, and how women are the carriers of morbidity in most of the cases and carry the disease burden, and what are the mental health issues that are more frequently found with women, and the mental health issues related to other genders and how their marginalization also leads to all kind of health issues is in the focus of this particular course. Then we also talk about the various strategies that have been adopted to address these problems and challenges. Then the other course is Gender and Governance, which is BGS 013. This course relates to the gender issues that we see vis-a-vis the governance of any institution.
So here we look into how gender is the policies and programs are gender blind, although they say that they are gender neutral, but we see that the gender concerns are not addressed even if it is supposedly a gender neutral program or policy. Then we move on to the sixth semester, in which again a learner has to take up one skill enhancement course, one general elective, and three discipline specific courses to make up a credit structure of 22. The skill enhancement course is BSOS 184, which is a technique of ethnographic filmmaking, which is part of the discipline of sociology. The course code is BSOS 184. Here, ethnography as a tool has been in focus to study filmmaking, but how gender can also be studied through ethnographic method is the intention of including this course for semester 6 learners of BA Gender Studies. Then the general elective course is BPCG 176, Psychology of Gender, which is a very interesting course where gender has been approached from the perspective of psychology, which is why we have to include it in the curriculum so that the learners are equipped to understand the psychological implications of a particular gender and how these gender implications affect the psyche and personality of a person, which is the focus of this course. Then the discipline specific courses which are falling under semester 5 and 6, I would request Professor Roy to throw light on them. As Nilima has already talked about the discipline specific courses in 5th and 6th semesters, let me talk a little details on gender perspective on health. That is BGS 04. What exactly it comprises of is very interesting for you to see that it is not only talking about reproductive health or physical health, it also talks about the mental health, which is very important these days. We are talking about reproductive health. We also are looking into the concerns of how industry and manufacturing units of the society is impacting the health. Therefore, the occupational health hazards are also dealt in the course. And it will be very interesting for you to see that how science has been seen as a discipline from a feminist angle, and the feminists are critiquing science as a core discipline. So it is very important for us to look into that, because when we talk about this, we are not only talking about healthcare system, we are not talking about the health of only women or men. We are also talking over here the health of non-normative sexual identities. So all the genders' health are being taken over here. It is very important for us to see that this is not only about the issues that is pertaining to the health that we think of, but we are also talking about immunization. As COVID has recently hit the country, we all are it is very important for us to know that we have been impacted by it, that immunization, the vaccines. We are also talking about sexually transmitted diseases and infections over here. We are also dealing in this about the health issues in adolescence. What kind of health issues do the adolescents or the young people face, especially the learners who are +2 in the teenage and the adolescent period, who will be our future learners? What kind of health issues they face, that is also talked about over here. We are also talking about menopause and menarche, which is very important, and most of the time this is not dealt in any courses anywhere. Even in the science institutes, they do not talk much over here. They do talk it
with the health institutions where medical or medicine is being studied. But we, along with it, we are talking over here about ableism. We are talking about disableism. We are also talking about sexuality and the disability. The intersectionalities of all these things are being dealt in the BGS 04, which you will be studying in discipline specific courses. And the other course is gender and governance, which is very important for you to know that gender and governance is a law-based program, and therefore when we talk about it, it is important for us to see that the governance that we are talking over here is not only in the context of gender inequality in governance, but also trying to locate the governance discourse in gender, trying to locate gender in that governance discourse. We are also talking about the women in local governance. We are talking about women's political representations. We are also talking about developmental policies that India has. These are all that we are talking about is Indian centric. The country is centric. It is India centric. So very less you'll know about the Western centric, but most of the examples that we are dealing over here is from the country centric. Therefore, the developmental policies, and also we will be talking towards the end of this course, gender and governance, we will be talking about the justice system. So therefore, the access to justice, who are the women lawyers we have, what are the judicial reforms that have been taking place in context in women perspectives. We will be talking about women in conflict, which is very important because hardly any of the legal studies do talk about women in conflict zones that we have. So that is also dealt over here in this course. These are fifth semester courses, and the last semester is mainly with the development and empowerment issues. We will be talking about one is BWEE 06, one is BWE 07, one is BWEE 08. These are organization, leadership, we have entrepreneurship, we have credit and finance. These are mainly with gender accounting, gender budgeting, gender mainstreaming, also about gender entrepreneurship, about mainly about women focus. So this will help you understand the concepts of women in different kinds of organization, what kind of leaders do women make, and how do they make women leaders. We are also talking over here about women businessmen, how self-help groups are created. All these things will be discussed in the sixth semester. Nilima, we would take a short break over here, and then we'll come back again to discuss about everything that we have been discussing, so that the learners do not miss out anything. Any queries, if you have, you are ready to post over here. We will be over here to answer. It is also requested to all the viewers who are watching us can post questions. We will be answering over here. Thank you very much. Do you wish to be part of a television studio like this, or any other media system, or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism and New Media Studies. Here in the School of Journalism and New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance their media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner,
Many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOGNMS offers programs from PhD in Journalism and Mass Communication till certificate level. We have Masters in Journalism and Mass Communication. The eligibility is bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. IGNOU employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills. Welcome back, viewers. In this section of our program, we will be throwing light on learner support mechanism that is available with this program, and then also talk about the contact people in case you wish to get more information about this particular program. And before winding up, we will give you a gist or a summary of other new programs that are being offered by the school. I would request Professor Roy to throw light on learner support system that is available with this BA program. Thank you, Nilima. The BA Gender Studies basically has all the learner support system that most of our BA program in the university has. So it begins with the self-learning material of all the courses will be having self-learning material. Along with, we will also have video and discussion forum. As most of our courses are there, we have regular interactive web counseling, we have radio counseling, we have teleconference sessions. We do have Gyan Darshans, which are video discussion forums. We also have Facebook, live Facebook sessions. We do have the very interesting part of this program is that we do have 2 of the courses that I've mentioned earlier. The 2 of the courses are Understanding Gender and Law and Gender Sensitization are in MOOCs. MOOCs is the Open Learning Sources Outsource System, online sources. So in this sources, you have the videos over there, you have materials, you have videos directly given by the experts and the counselors and also the coordinators of the program and the experts of those areas. We do, as most of the courses in this in BA as well as the other BA program, you have a direct counseling session with the course coordinators and the academic counselors. These are most important learner support system that we have in our university, and this will be maintained thoroughly all the time, regularly. So there will be regular interaction with the academic counselor as well as the program coordinator. Most importantly, the course coordinators of all the courses that is bagged in this BA Gender Studies.
Also very important over here to understand that the online session that we have, we will be having a new Google Classroom. We will try to create a Google Classroom so that the students do not miss out anything, and the informations to the learners that those who will be enrolling with us, will try to get in touch with them through all possible means, the social media as well as the Facebook Live, the other conferencing counseling sessions that we have with the university. Nilima, now you can talk about the contact and what details do we have. Yes, before moving on to that, I would like to throw some light on the future scope of this undergraduate program, namely BA Gender Studies. The future scope has, I'm dividing into two broad categories, that is academics and employment. With regards to the academics, a learner after completing BA Gender Studies can directly take admission into a postgraduate degree anywhere in the country in the area of women and gender studies, or in the allied specific disciplines that have been covered under this particular BA program. The employment opportunities lies mostly with the government agencies like ministries or other departments needing the understanding of gender at academic level, all with non-governmental organizations, civil society, international agencies requiring understanding of gender, and also with corporate sector now, because media is another very important area where learners with understanding of gender are preferred, and in language and literature also learner can take up a postgraduate degree. Now, coming to the important aspect of whom to contact if you wish to know more about this particular program. The information is available on the university website and also on Twitter, handles that are handled by the school as well as at other regional centers. You can also directly contact the program coordinators, Professor Himadri Roy and Nilima Srivastava. Both of us are present here in this program today, and our contact numbers are 011 2957 2050 or 011 2957 1620. You can also contact us through our email ID, which is himadriroy@ignou.ac.in, Nilima Srivastava @ignou.ac.in. You can also contact us if you are Delhi based, which is you can also go to your regional center closest to you to get more information about this program, which is available with the university and also with the regional centers. Now, I would like to sum up today's discussion so that all those viewers who missed out on the earlier part of this program can know about what has been discussed in this program today. The program undergraduate degree course BA Gender Studies has been launched by the university in January 23 cycle, is housed under School of Gender and Development Studies. The total credit weightage of BA Gender Studies is 132 credits divided into 6 semesters comprising of 22 credits of each semester. The minimum period for completion of this degree program is 3 years and maximum period is the minimum period is 3 years and maximum period is 6 years, which is common to all undergraduate degree programs of the university. I repeat, the minimum time required to complete this degree program is 3 years, which is same for all the BA programs of the university, and the maximum period to finish or to complete the degree of BA Gender Studies is 6 years. The eligibility for this BA program is 10 plus 2 from any discipline, whether a learner is from humanities, science, commerce discipline, and
and the fee per year is 4,000 rupees for 1 year. That means a learner will have to re-register himself or herself after first year by paying a fee of 4,000 rupees, and another time re-register after completion of second year when a learner enters the third year of the UG degree program. The program is available in January 2023 cycle and will be on offer in both the cycles of July and January admission cycles now onwards. The degree program is based on multidisciplinary approach with focus on gender and drawing courses from other disciplines that helps in building the understanding of gender and also develop skill-based understanding of gender issues that are prevalent in any society, basically focusing on Indian scenario and Indian perspective. After completing BA Gender Studies, a learner will be able to apply gender lens into everyday lived experiences of their own life as well as lives of others, and also understand how gender impacts each and every person or each and every section of the society, whether it is men, women, or the other gender. Hope the information provided to you in this program is helpful in enrolling for BA in Gender Studies. I would now request Professor Himadri Roy to throw light on other programs, new programs that the school has started offering in. With the school, we have 3 new certificate programs. One is certificate in gender in law. The second one is gender and science, certificate in gender and science, and the third one is PG certificate in gender, agriculture and sustainable development. But I would pick up the courses of this certificate which are being bagged in the basket of BA Gender Studies, especially the law and science. In the law, we have taken in the law, we have that in the second semester core course, which is understanding gender and law. In this, basically, it is not only talking about women or heteronormative way of seeing man and women, but also the multiple sexualities. And we are trying to see law, understanding law through gender and sexuality. We are also trying, the courses will also try to map the multiple sexualities under the legal lens. The other aspect of this is that to understand the law, to understand the Indian legal system, the role of law in society, the women's movement and its engagement with law, also the strategic law that is used by groups or communities in this country. The third aspect of this understanding gender and law is in patriarchy. We will be dealing with heteronormativity. We have other intersectionalities into it. We have class, we have caste, we have religion, we have disability, as well as, very importantly, the discrimination against LGBTQ, the other sexuality, non-normative sexualities of the society. This is in our second semester. The third semester course on the same law is in fourth semester, that is gender-based violences. In gender-based violences, we are not only theorizing gender-based violence, but we are also talking about violences against women, violences against collectives, violences against LGBT, also health law, which is very important for us to see today, because in this we are talking about the intersectionalities of caste, culture, religion. We are seeing patriarchy, how the patriarchy operates in contemporary India. As I told before, it is important that most of our courses are based on India. So therefore, the crime against women, we are talking about domestic violences, we are talking about sexual violences, we are also talking about female feticide and infanticides. We are talking about cyber crimes, which is very important for these
these days to understand what exactly is cybercrime, how does it operate from under the gender-based violence thing, and one has to have the conceptual knowledge of it, and the learners will be exposed to such conceptual knowledges. Then we have violences against collectives in the sense like how communal violences takes place, how the caste-based violences takes place, how political conflicts and insurgency, then how the violences in political conflict and insurgency takes place, and the most important and the last in it, how the state-led violences takes place. This is all in the gender-based violences course. We also have violences against the marginalized society, marginalized gender, that is LGBTI. Over here we are talking about how institutionalized violences for them takes place, how the social violences for this community takes place. We are talking about discrimination. We are talking about same-sex relationship from the legal angle. And the last on this category for gender-based violences is the health law. The health law, then we are talking about surrogacy, we are talking about mental health law, we are talking about occupational health law, we are also talking about reproductive health law. So these two courses are very important for you to understand the legal aspect from the gender perspectives. The other legal course that we have over here is gender and governance. As I told before also, that these are the this gender governance is basically talking about gender inequality and how we are trying to locate gender in different governances, from the grassroots to the constitutional, to the parliament, to the legislature, to the panchayats. We are also talking about globalization and post-globalization. We are talking about labor force. We are also talking about informal sector labors. We are talking about the conflict that is happening in the law. So therefore, these three courses, which also is a certificate course with the school, is part of the BA Gender Studies. And from the science perspective, as I was saying, in the science we have it in the third semester, that is Gender, Science, Technology and Society. In Gender, Science and Technology, we have the science that is looked from gender lenses. It is not only just society, it is also historical evolution that we are looking into. We are talking about theories, a bit of conceptual knowledge. We are talking about women in modern sciences. We are talking about health and well-being, how the local knowledge system operates in farming and food production. We are talking about environment. We are talking about climate and energy. We are also talking about agriculture and allied sciences that is related to the science and technology to understand gender from it. We are also talking about ICT. We are over here talking about the challenges that the women or the gender faces in STEAM, that is science, technology, engineering and mathematics basically. And the last of this category that we'll be dealing with is to discuss the feminist critique of not only science, also technology, and not only just critiquing, the course is trying to provide an alternative ways of looking into science. That is why this course will become very important, a foundational course for you to move ahead. And the other course that we have from the science is socio-political dimensions of gender and science, that is in the fourth semester, which is very important because science literacy is such a subject that many do not understand, and why it is important, why the access of science education is important, why stereotyping of these disciplines are operating in the country is very important. Therefore, gender budgeting, gender policy, gender practices, all these are being dealt in that course. Also with manufacturing industries like textiles, garment, jewelry. We are also talking about health industries. We are talking about pharmaceutical. We are talking about beauty industry. And also the global trends. What kind of global trends are there in universalism? We are talking about particularization. We are talking about gender disparity in the global eye of science and technology. We are talking about genetic debates. This course will be talking about not only genetic debates in intersectional perspectives, also construction of race, science, sexuality as well as caste. That is why these courses in the first 4 semesters will help you to understand what exactly is this
why is BA Gender Studies so necessary in today's market. And the last course, that is in the 5th semester, is also about gender perspective on health, as Nilima already talked about it, and I also did discuss that it is not only about the health of women or men, it is also about the health of non-normative sexualities that exist over here in the society. It is very important for us to see the adolescent's health. It is also about the intersectionalities of the health. All this together makes our another certificate program, which is Gender and Science. But these three courses are taken into the basket of BA Gender Studies. The other course that we have in the second semester is issues of gender and development. That is where the gender, agriculture and sustainable development is coming over. Over there we have discussed about about the labor, we are discussing about the sustainability, we are discussing about the developmental issues, we are talking about technology, we are also talking about resources and how women's role in energy efficiency takes place. Resources in the sense like natural resources that exist, like land, water, forest, biodiversity, all these are taken together into one single course, and we do have a extensive of this in PG certificate of gender, agriculture and sustainable development. These are all that we have in our school. And these are all comprising BA Gender Studies. I hope the learners get, Nilima, the learners would get a beautiful and a very interesting subject now, which is open to all across India, and this is the first time a university is giving BA Gender Studies to the country, to the nation. I wish to draw the attention of our viewers that in case you are interested in a particular area of gender, say gender and science or gender and law, the school offers these two certificate programs which are of 6 months duration and comprises of 16 credits. So you can get an in-depth understanding if you want to wish to delve into these two areas of gender. We thank you for being with us today for this program, where we threw light on the program structure and eligibility criteria and the other academic requirements of completion of BA Gender Studies. I hope you will be able to choose this course if you go on the IGNOU website and look it up in the common prospectus, or in case if you wish to have more information about it or you need any clarification, you can reach out to both of us, to either of us, or contact the school at the given telephone lines which are available on the web page of SOGDS also. Thank you once again for being with us today. And I would like to add, the admission is open till 31st January for the January 2023 cycle in Samarth portal of IGNOU Samarth admission portal. You can go there and register yourself if you want to learn more about BA Gender Studies. Thank you, learners. Thank you all the viewers who have been with us listening to the details of the course structure and all the program nitty-gritties. Thank you, Nilima. And thank you all of you.